Okay, now let us solve the 10th part of this question. 10th part of question number 9 is, so question number 9, 10th part is 4x square plus 3x plus 5 is equals to 0. Okay, 4x square plus 3x plus 5 is equals to 0, and this is a quadratic equation and we need to determine its root with the help of method of completing the squares. Now what will be the first step? Again the same process, exactly same process. The first step is to make the coefficient of x square as 1. And how will we make the coefficient of x square 1? By dividing this equation by 4. So divide by 4. So when you divide it by 4, it will become x square plus 3 upon 4x plus 5 upon 4 is equals to 0. Okay, x square plus 3 upon 4x plus 5 upon 4 is equals to 0. Now in this equation the coefficient of x is 3 upon 4. So 3 upon 4 is the coefficient of x. We will divide this coefficient by 2 and it will give you 3 upon 8. Then we will square this coefficient, and by squaring this coefficient it will become 3 upon 8 whole square. Okay, so this will be the coefficient, the value of the term that should be added to this equation and subtracted from this equation. So let us add this and subtract this from the equation. It will become x square as it is, then plus 3 upon 4x, okay, then minus 3 upon 8, plus 3 upon 8 whole square plus 5 upon 4 and minus 3 upon 8 whole square is equals to 0. Okay. Now let us rewrite this expression. So it will become x square plus 2 times 3 upon 8 into x plus 3 upon 8 का square and plus 5 upon 4 minus this 3 square is, square of 3 is 9 divided by 8, square of 8 is 64 is equals to 0. Okay. Now this expression x square plus 2 times 3 upon 8x plus 3 by 8 whole square is basically a square plus 2ab plus b square. This is equals to what? A plus b whole square. So in place of this expression I can write x plus 3 upon 8 whole square and plus the LCM of this. You can either multiply both the terms or you can take LCM. So if I multiply, it will give you 4 into 64. Okay, then 64 cross multiplied to 5 and this 4 into 9. So 64 into 5 is 5 6 are 30, that is 300, and 5 2s are 5 4s are 20. So 300 plus 20 is 320. So this will give you 320 minus 4 into 9 is 36 is equals to 0. Okay. Now further simplifying it, it will give you x plus 3 by 8 whole square. Okay, x plus 3 by 8 whole square plus, now 320 minus 36. So 320 minus 20 is 300, then subtracting 10 more. So 300 minus 10 is 290 and then subtracting 6 more. So 290 minus 6 is 284. So plus 284 upon this is 4 into 64. So 4 into 64 is equals to 0. Then subtracting, then calculating this,
So 4 ones are 4 and 4 28, 4 sevens are 28, then 4 ones are 4. So 71 divided by 64. Now this expression can be rewritten as 3 upon 8 whole square is equals to minus 71 upon 64. So this is minus 71 upon 64, x plus 3 by 8 square is equals to minus 71 upon 364. Now observe it very carefully. Here the square of this expression x plus 3 by 8 is equals to minus 71 upon 64. But square of any number, square of anything has to be पॉजिटिव. स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा. सो हियर वी कैन सी दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन while this expression is a negative expression. So positive expression cannot be equal to negative expression. Okay, this is a positive expression and this is a negative expression, but it seems that they are equal, but they can't be equal. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सप्रेशन कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव ही होगा. आप x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये एक्सप्रेशन नेगेटिव ही है. ओके, सो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर कभी नहीं होंगे. इट मीन्स दिस रिलेशन इज रॉन्ग. ओके, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग. इक्वेशन इज रॉन्ग. Why it is wrong? Because the LHS is positive while RHS is negative. It cannot happen. If LHS is positive, then RHS has to be positive. If RHS is negative, then LHS has to be negative. Okay? दोनों को सेम होना चाहिए. It means ये इक्वेशन गलत है. और ये इक्वेशन गलत क्यों आ रही है? Why this equation is wrong? Why we are getting a false relation? Okay, this is a false relation. It's a false relation. And why we are getting this false relation? We are getting this false relation because this equation, this given equation do not have real roots. Okay? What I am saying that why we are getting this false relation, it's because this equation do not have any real roots. इस equation का कोई solution possible नहीं है, कोई real solution possible नहीं है. Okay, real means something which is realizable, is a real. Okay, so real equation, इस equation का real solution possible नहीं है, real root possible नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर एक false relation मिल रहा है. So if in any equation I get this kind of false relation, I will say that this equation do not have any real roots. Okay, इस equation के real roots possible नहीं है. So अभी तक हमने पहली एक equation देखी जिस equation का roots निकाला नहीं जा सकता, जिसके roots possible ही नहीं है, roots exist ही नहीं करते. Okay, so do not have any real roots, or we can say real roots do not exist. So यह एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, पॉसिबल नहीं है. ओके, सो बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया, जब हमने सॉल्व करना शुरू किया, तब हमें ये नहीं पता था कि इस इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल नहीं है. हमें ये चीज़ नहीं पता थी. हमने तो अपना मेथड लगाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया. लेकिन जब हम इस फॉल्स रिलेशन पे पहुंचे, तब हमें पता चला कि इस इक्वेशन के तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. लेकिन क्या ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स हम फैक्टराइजेशन मेथड से पता लगा सकते थे? नो, इट कैन नेवर हैपन. हम नहीं पता लगा सकते थे. फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस इक्वेशन का ये नहीं जजमेंट दे सकते थे कि इस इक्वेशन के रूट्स
अवेलेबल हैं या फिर नहीं, एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। हम सिंपल इसे सॉल्व करने की कोशिश करते, बट हमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिल पाता जिससे ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। इसीलिए फैक्टराइजेशन मेथड एक जगह पर आके लिमिटेशन होता है उसका, एंड दैट लिमिटेशन कि जब इस तरह के फॉल्स रिलेशन या फिर ऐसी इक्वेशंस आती है जहां पर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर ऐसी इक्वेशन जहां पे रियल रूट्स में जैसा हमने देखा था 9th क्वेश्चन में रूट 19 जैसा कुछ टर्म आ रहा है, तो वहां पर फैक्टराइजेशन मेथड लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए इट्स बेटर टू यूज दिस मेथड। दिस मेथड इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। दिस मेथड इज अ बिट बेटर compared to the factorization method, okay, but it involves a lot of calculation। यहाँ पे हमें दिख रहा है बहुत सारा कैलकुलेशन है, okay, so हम इस कैलकुलेशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से कि ये कैलकुलेशन हट जाए, ऐसी कुछ कोशिश करते हैं। so let us try to generalize this method of completing square। so we will going to learn now generalization of method of completing the square। now how we will going to generalize this method? हम इसे generalize कैसे करेंगे? To generalize this method of completing square, we will determine the roots of generalized quadratic equation। Okay, what I am saying, इस method का generalization form बनाने के लिए we will try to determine the roots of the generalized form of quadratic equation। What is the generalized quadratic equation? The standard form of quadratic equation. The standard quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. This is the standard quadratic equation. Now we will try to determine its roots, okay, by the method of completing square। so what will be the first step in this method? The first step is to make the coefficient of x square as 1। so we will divide this equation by a, okay, because a is the current coefficient of x square, hence I will divide this equation by a। so if I divide it by a, I will get x square plus b upon a x plus c upon a is equals to 0, okay, x square plus b upon a x plus c upon a is equals to 0। now what will be the second step? Second step is to divide the coefficient of x by 2। so the coefficient of x is what? It is b upon a। we will divide this coefficient by 2 and we will obtain b upon 2a, and then we will square this coefficient। so when you square this coefficient, it will become b upon 2a whole square, okay। now what will be the next step? In the next step, I will add and subtract this expression, that is b upon 2a whole square, in this equation, okay। so the equation will become x square plus b upon a x plus b upon 2a whole square, then plus c upon a as it is, and then minus b upon 2a whole square is equals to 0, okay। now rewriting this expression, I can rewrite this expression as x square, then plus this b by a can be written as 2 times of b upon 2a x, okay, plus b upon 2a whole square, and I can shift these two terms to the RHS, okay, I can shift these two terms to the RHS and it will become equal to
Now this b upon 2a whole square will be shifted to that side and it will become b square upon 4a square, okay, and this c upon a will become minus c upon a, okay. This is what we will get. Now x square plus 2 times of b upon 2a x plus b upon 2a whole square. Observe this expression. It is simply a square plus 2ab plus b square. And what is a square plus 2ab plus b square? It is basically a plus b to the power 2. So I can compress this, I can contract this expression, and it will become x plus b upon 2a to the power 2, okay, x plus b upon 2a to the power 2. Now this expression, it is b upon b square upon 4a square minus c upon a. I can take LCM as 4a square into a, so you will get is equals to, in the denominator it is 4a square into a. I have multiplied the denominator of both the fractions 4a square into a. Now by cross multiplying this, a will be multiplied to b square and 4a square will be multiplied to c. So it will give you b square into a. So b square into a minus 4a square c, okay. This is 4a square c. After this, I can write this expression as x plus b upon 2a to the power 2, and you can see that in this equation, in this expression, I can take a as common from the numerator, and I can deduct this a. I can take a common from this expression, and I can cancel this a from this a, that is the a in denominator. So x plus 2b upon 2a whole square will be equals to b square minus 4ac upon 4a square, okay. We will get this expression b square minus 4ac upon 4a square. Now if I square root both the sides, I will get, so by square rooting, both the sides, I will get x plus b upon 2a is equals to plus minus root of b square minus 4ac, okay, b square minus 4ac as it is, and upon 4a square, okay. This is what we will get after square rooting, because this expression is not a perfect square, but this expression is a perfect square. So by square rooting, this 2 will get removed, this will get cancelled, and it will become a plus b upon 2a is equals to plus minus root b square minus 4ac upon 4a square. Now you can see that this 4a square, 2 into 2 is 4, means square root of 4 will be 2, and the square root of a square will be a only. So I can write this expression, I can further simplify it, and I can write it as x plus b upon 2a, okay, is equals to plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, okay. It will be plus minus root of b square minus 4ac upon this 4, root of 4 will become 2 and root of a square will become a only. So this is upon 2a. So from this I can say that x is basically equals to minus b upon 2a plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. I have shifted that minus b to RHS. Now by shifting this minus b to RHS, I can take here LCM. The LCM, you can see the denominator are same in both the fractions. So x will become
माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. Okay, so what is this x? This x represents the roots, the solutions of the generalized form of quadratic equation. This x represents the roots of standard quadratic equation. This is the standard quadratic equation. So this expression represents the roots of this standard quadratic equation. Now you can see that all the quadratic equations are somehow related to this expression only. कोई सी भी quadratic equation को अगर मैं देखता हूँ तो वह equation इस फॉर्म में दिखाई देती है. फर्क सिर्फ a, b और c का होता है. कोई सी भी quadratic equation में a, b और c, that is the coefficient of x square, coefficient of x और constant term, इनकी अलग अलग वैल्यूज लेकर मैं अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना सकता हूं. लेकिन उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ध्यान से देखने पे आई विल फाइंड कि वह सभी इक्वेशंस इस तरह की ही दिखाई देती हैं. इसीलिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं. नाउ इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज जब हम डालेंगे तो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जनरेट हो जाएंगी. और उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और सब्स्टिट्यूट करके बड़ी आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन डिटरमाइन किया जा सकता है. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड, वी हैव compressed this approach, that is the method of completing square, to a single formula. एक इस तरह के फॉर्मूले में हमने इस पूरी इक्वेशन को, एक पूरे मेथड को कंप्रेस कर दिया है. और फाइनली ये जो इक्वेशन आई है हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं. दैट इज, इसे एक और नाम से जाना जाता है श्रीधराचार्यस रूल. ये एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन, जिन्होंने इस फॉर्मूले को एक तरह से कहें कि इन्वेंट किया था, जिन्होंने कुछ मैथमेटिक्स लगा के कुछ कैलकुलेशन करके इस फॉर्मूले को बनाया था. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. And this quadratic formula can be used to determine any the roots of any equation. कोई भी इक्वेशन हो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से उस इक्वेशन के रूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव जनरलाइज दिस मेथड एंड डिटरमाइन अ सिंगल फॉर्मूला. हम इस फॉर्मूले को और डिटेल में सीखेंगे, बट इस क्वेश्चन नंबर 9 को और इस अप्रोच को पहले आप नोट कर लीजिए. देन वी विल understand this formula in more detail.